Okay guys, so now we are going to develop and design our whole project, which we have already seen in our previous tutorials, like how we can develop the login activity and the user register system activity in Android app. Okay guys, so let's start now. But before going to start, if you did not subscribe my channel, then please subscribe my channel. Okay guys, so now let's start now. So open your Android Studio. ठीक है, हम शुरू करने वाले हैं और मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम कैसे अपने एंड्रॉयड ऐप में लॉगिन और रजिस्टर यूजर सिस्टम एक्टिविटी को ऐड कर सकते हैं. सो गाइस, अब हम शुरू करने वाले हैं. सो ओपन योर एंड्रॉयड स्टूडियो. आई एम गोइंग टू ओपन माई एंड्रॉयड स्टूडियो. सो ओपन योर नाउ. ओके गाइज, सो नाउ माई एंड्रॉयड स्टूडियो इज गोइंग टू बी स्टार्ट नाउ. मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन होने जा रहा है और आप भी अपना ओपन कर लें. ओके गाइज, सो नाउ माई एंड्रॉयड स्टूडियो हैज बीन ओपन एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट ए न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट. ओके गाइज, अब हम अपना न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे. उसके लिए गाइज हमें स्टार्ट एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट क्लिक करना होगा. So give the project name whatever you like, whatever you want. I will give give the project name like login activity. Click on next. Guys, यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट को नाम दिया है और आप भी नाम दे दीजिए. Click on next and you can select any API platform, whatever you like, whatever you want. Currently it is running in time. It is Android Nougat and the Oreo is already Oreo is also came now. Okay guys, so currently I am running in my phone Android 7.0 Nougat, but I will test this app in my emulator, so I can select anything whatever. Okay guys, so guys यहाँ पे आप अपना API प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लीजिए. किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमैलो, नॉगट और ओरियो, whatever you like. Okay guys, so मैं यहाँ पे लॉलीपॉप सेलेक्ट करूँगा. मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ज़्यादा. I will select Jelly Bean KitKat. Okay guys, so click on next. Sorry, I will select lollipop. So click on next. Click on empty activity and click on finish. Okay guys, and now we have to do some wait. Okay guys, हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि ये थोड़ा रीएंडरिंग, हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा रीएंडरिंग होगा. It will take some time for rendering and set up the project like Gradle. It will take some time for building the Gradles. Guys, so कुछ टाइम लगेगा Gradle को build होने में. Guys, so we have to wait some time. Okay guys, so now our project is ready for code. Okay guys, as I told you guys, I will use both language such Hindi and English. So then I will use both language. Okay guys, so if you are beginner, then you are looking here, there is a two page or two activities are open here. The first one is main activity and the first one is active main.xml file and the other file is main activity.java file. Okay guys, so let me tell you what is this and what is the use of this activity. So activity main.xml we will use for designing our page, designing our activity and designing our layout of the application, and main activity.java file, here we will code or our application, we will provide the functionality for our application. Okay, so guys, यहाँ पर दो एक्टिविटी आपको दिख रही हैं. दी फर्स्ट एक्टिविटी गाइज जो एक्टिविटी main.xml, यहाँ पे गाइज हम डिज़ाइन करेंगे अपनी ऐप को, अपने ऐप के लेआउट को, और मेन activity.java में गाइज हम कोड करेंगे अपनी एप्लीकेशन को, हम फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेंगे बाय दी जावा कोड्स. गाइज, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो गाइज, सबसे पहले गाइज हम डिज़ाइन करेंगे अपनी यूआई को, अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं. उसके बाद गाइज हम मेन activity.java फाइल को कोडिंग करेंगे इसके बाद. ठीक है, सो लेट्स डिजाइन अवर यूआई नाउ. सो गाइज, फर्स्ट एक्टिविटी में गाइज हमें क्या क्या चाहिए होगा, व्हाट वी नीड in our main activity. So first of all, I will not go fast, I will, because I just want to save your time, so I'm a little fast, sorry for that. Okay guys, so now our
type it now, and now we will remove this padding. मैंने पैडिंग भी रिमूव कर दिया है। अब इसके बाद गाइज हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे अपनी कोडिंग, अब सॉरी अपनी डिजाइन करेंगे अपनी ऐप के फ्रंट पेज और मेन एक्टिविटी को। सो गाइज लॉगिन और लॉगिन एक्टिविटी की ऐप के लिए गाइज हमें फ्रंट पेज पे मिनिमम लॉगिन के लिए गाइज हमें 2 एडिट बॉक्स चाहिए होंगे और एक बटन चाहिए होगा लॉगिन करने के लिए। सो लेट्स डू इट नाउ फास्ट। गाइज मैं यहाँ पे कोड नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ कोड्स को, डिजाइनिंग कोड्स को, बिकॉज इट विल सेव अस आवर टाइम, इट विल सेव आवर टाइम। गाइज इससे हमारा टाइम बचेगा थोड़ा। सो लेट मी डू दिस नाउ क्विकली। यहाँ पे हम डिजाइन कर रहे हैं अपनी ऐप को, और हम डिजाइन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, 2 एडिट बॉक्स, एक टेक्स्ट व्यू और एक बटन। सो लेट मी कॉपी दिस नाउ। Okay guys, so now I have copied paste here a text box and 2 edit box and 1 button and 1 text view. Guys मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिया है लॉगिन प्लीज, एक हेडिंग लिया है टेक्स्ट व्यू में, यहाँ तक है कोडिंग। और गाइज लेट मी डू दिस बिगर नाउ, थोड़ा लेट मी डू दिस बिगर जैसे कि आपको क्लियर दिखाई दे सके। गाइज मैंने यहाँ पे एक लॉगिन प्लीज की हेडिंग ली है, उसके बाद मैंने यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ अपने डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो में, तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन द मेन कोडिंग्स गाइज। एंड द सेकेंड वन यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंड्रॉइड ईमेल के लिए एडिट बॉक्स लिया है, एंड फिर से मैंने एक एडिट बॉक्स लिया है पासवर्ड के लिए। उसके बाद मैंने लॉगिन बटन लिया है, यहाँ पे इसकी कोडिंग यहाँ पर है ठीक है। एंड उसके बाद मैंने एक साइन अप के लिए यहाँ पे एक टेक्स्ट लिया है ग्रीन कलर का, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ठीक है। सो हियर आई टुक हियर 4 थिंग्स, द फर्स्ट वन हेडिंग, फर्स्ट वन टेक्स्ट व्यू फॉर हेडिंग, the second one edit box for the enter email, and third one edit box for password, and fourth one thing is button for login, and fifth one is for text view for the sign up, for go to on the sign up activity. Okay guys, and now we are going to move on our java activity guys। इसके बाद हम java main activity और java class में बढ़ने वाले हैं, और हम अपने कोडिंग एक्चुअल कोडिंग को करने वाले हैं ठीक है guys। ये तो अपनी डिजाइनिंग कोडिंग होगी, इसके बाद हम अपनी ऐप को फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेंगे बाई जावा कोड्स क्लास। एंड हियर व्हाट वी नीड, तो यार सबसे पहले गाइस हमें कुछ बटन को सबसे पहले गाइस हमें बटन और एडिट बॉक्स को इनिशियलाइज करना होगा। सो लेट्स डू इट नाउ फास्ट। बटन गाइस मैं यहाँ पे बटन नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऑन क्लिक मेथड से ऐड कर दूँगा, तो बटन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आई थिंक। सो लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस बटन गाइस। सो हियर वी नीड हियर 2 एडिट बॉक्स, एंड सो लेट्स डू इट नाउ। एडिट बॉक्स, एडिट टेक्स्ट, एंड इट विल एंटर email, and this second is for password। Yes, and now we have to initialize this guys। इसके बाद हमें initialize करना है इनको। So enter email, कास्ट कीजिए एडिट बॉक्स, आई मीन एडिट में, सॉरी, फाइंड किए बाय एडिट टेक्स्ट ईमेल like third second one, just copy this line, whole line, paste below down, yes, and change their password, change your password also, yes। now यहाँ पे हमारे गाइस एडिट बॉक्स इनिशियलाइज हो चुके हैं। इसके बाद हमें क्या करना है गाइस, इसके बाद अब हमें डेटाबेस क्रिएट करना है जहाँ पर हम अपने लॉगिन डिटेल और साइन अप डिटेल को सेव कर सकें और रिट्रीव कर सकें लॉगिन के टाइम पर।
Okay guys, and guys, now we will create our database for login and register and sign up database sign up details for saving the sign up details. Okay guys, so let's create another class. गाइज इसके लिए आज हमें another class create करनी पड़ेगी. Just create the class, right click on your package folder and click on new Java class. And guys, class and first of all I will create a user contact class. So give the user contact class. Click on OK. Guys, so what is the purpose of this? Guys, the purpose of this class for guys, we have created this class because if we want to change and if we want to change something in our database like column name or anything, table name, anything, guys, if we want to add or remove, we can do this easily by this class. Okay guys, so let's and inside this class we have to create our another static class. So create that. For guys, we have to create here abstract class. guys, यहाँ पे हमें एक abstract class create करनी होगी. static abstract क्लास का नेम आप कुछ भी लिखते हो, लाइक यूजर इन्फो. दिस इज अवर इनर क्लास. गाइस ये हमारी इनर क्लास है और हमारी मेन क्लास गाइस यूजर कॉन्टैक्ट ही है. गाइस, सो इन दिस क्लास एंड नाउ वी विल क्रिएट सम वेरिएबल्स लाइक यूजर ईमेल, यूजर पासवर्ड एंड टेबल नेम etc. So just create now. So we will create for user email. I will take it whole capital. And create the key for this column. So key name will be user email. guys, ये हमारी की को रिप्रेजेंट करती है और ये हमारे कॉलम नेम को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है guys, and this will represent our column name and this will represent our key. So copy this whole line and paste here 2 times. Guys, so this one email, this one we will take your password. Change this password. And this one, guys, it will be table name. We can change whole. And the table name, I will take the name of this user info. Guys, now our abstract and user contract class has been done, and now we will create our database class, actual database, original database class, and the SQLite database class. So in this we will save our database and create our database, all everything and all other action they will perform in that class. गाइस, इसके बाद गाइस हम डेटाबेस SQLite डेटाबेस की क्लास क्रिएट करेंगे गाइस, जिसमें हम क्वेरी, जिसमें हम टेबल क्रिएट करेंगे और कॉलम को क्रिएट करेंगे और अपनी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे और रिट्रीव करेंगे, सेव करेंगे. ऑल ऑपरेशन गाइस हम उस क्लास में करेंगे. गाइस, सो लेट्स डू इट नाउ. तो क्रिएट अनदर क्लास, राइट क्लिक ऑन योर पैकेज फोल्डर, क्लिक न्यू जावा क्लास. And guys, I will name this class database helper. इस क्लास का नेम database helper दूंगा. तो guys इस क्लास को मैं एक्सटेंड करना होगा SQLite open helper में. Extend this class by using the SQLite open helper, and it will give us some methods. So implement those methods. The both method we have to implement. guys, हमें दोनों मेथड को इम्प्लीमेंट करना होगा. And besides that, it is still showing a red line
here because it is saying that there is no default constructor available in Android. Guys, हमें यहाँ पे and guys we need here constructor. We have to create here constructor. Guys, हमें यहाँ पे constructor create करना है, so let's do it now fast by. It is not showing here. Why it is not coming? If it is not coming, I can create myself. Otherwise, it is coming now. Right, so create constructor matching super. So guys, we can, I think the first one we need here. Guys, so we have to change this constructors and the inner values, but we will do it later. Guys, यहाँ constructor मैंने यहाँ पे implement कर लिया है, but it is so long. यहाँ पे guys we need here only 3 things. The first one is for database version, database name and context. Guys, यहाँ पे database का name अभी हमने create नहीं किया है और cursor factory object यहाँ पे null रहेगा और version भी हमने database का create नहीं किया है. So guys, सबसे पहले मैं database की कुछ details create करनी है, like column names and database name और database version etc. So let's do it fast now. Final string database name. And the database name I will create here login DB. I will give the database login DB. And here database version, just copy this whole line, paste one more time, paste one more time. And here I will change the database version. But it will be int, it is not a string. ये स्ट्रिंग होगा और यहाँ पे चेंज करना है हमको 1. And after this we need here database name, database version. Okay guys, and the final thing we need a query. So create the query. Query name anything. I am just typing a create query. Yes, and now we will write here query, but before write the query, just change something here. So our constructor is showing the red lines or errors. Guys, first one we have to just remove this comma. यहाँ पे हमें database का name pass करना है, so pass here database name. We have to database name, and sorry, what happened? Something is wrong. And this will be null because we don't have any value for cursor factory object. And database version will be database version. Guys, now our constructor is done. Guys, and now we will create or write our query for creating the tables or column names. Guys, जब हम यहाँ पे query लिखेंगे table create करने के लिए और column create करने के लिए, so just write that now. Sorry guys, I forgot to change this. जब मैं query लिखा लूँगा guys, now I am going to write query. So be careful, write the query because it can create the mistakes in your coding. So your tables or column may be not create very well. So guys, you just write the query now. Create table, and plus we need to some information from user contact class like table name. So our table name is saved in our user contact.java class. This is here. So we will get from this class. So just type the class name user contact and call the inner class user info, and now our table name will be visible. So table name is table name. Guys, and
create table name, and after this now we need to create some columns. So create the columns now. The first column will be guys, so call that class again. Call the inner user contract dot new user info, and create the first column. First column is our user email, plus, and it will be the extension for this text. So let me give the enter text. It will be text and a comma, and create the other column similar like this. So just plus, and call the inner class user contract dot user info dot user password. Okay guys, this is our second column name, and it will also be like text. Just give some space in this. And now close the this table. Close this. Something is wrong here. This will not be here. Okay guys, now it is done. Okay guys, now I have wrote the query for creating the table और column names. guys, मैंने यहाँ पे query लिख दी है table और column name create करने के लिए. इसके बाद अब हमें इसे पास करना होगा in this method. So first one method is for on create. guys, इस मेथड में हम query की डिटेल पास करेंगे और उसके बाद हमारी क्वेरी जो है वो रन होगी और एग्जीक्यूट होगी. उसके बाद ये कॉलम और टेबल को क्रिएट करेगी. टेबल क्रिएट होगी हमारी. और इस कॉलम में गाइज ऑन अपग्रेड मेथड में व्हाट in the second method on upgrade, here if our table is already created, then we will not create our table again. So for that we will write some statement here guys. So now we are going to create our table. So just to pass here in this on create method by using the SQLite database object. This is here. So SQLite dot executable, call this method executable, and pass our query name. So our query name is create query. It is capital guys. Now it is have passed guys, and now our query will create. So guys, for monitoring our this coding or details, we can pass here a log message. गाइस, मैंने यहाँ पे एक लॉग मैसेज पास कर दिया है जिससे हम मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारी टेबल क्रिएट हुई या नहीं. ठीक है गाइस. Okay guys, so now our database has created tables or queries have created, and now we can monitor this our details, our table is created or not, but I don't think we should monitor here. Or let me show you how to monitor this. So you can usually monitor this your table और column name is created or not. guys, हाँ, आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके टेबल और कॉलम क्रिएट हुए हैं या नहीं. उसके लिए गाइज मैं आपको एक सिंपल सा बताने जा रहा हूँ. आपको ये करना होगा. guys, so for that guys, we need to here simply guys, we just need to create database and create the object of SQL database db, and call the get writable database. Okay guys, so
guys, and after writing this, and now we need to go back in our main activity.java class, and there we need pass. First we need to create here the instance of the database helper.java class. So create the instance of database helper.java class. guys मैं यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट करनी होगी डेटाबेस हेल्पर क्लास की, और हमें कॉल करना होगा गेट रीडेबल डेटाबेस मेथड को. सो जस्ट डू दैट क्विकली नाउ. गाइज यहाँ पे हम मॉनिटर कर रहे हैं गाइज कि हमारे टेबल और कॉलम्स क्रिएट हुए हैं नहीं. उसके लिए गाइज मैंने आपको बताया कि सिंपली आपको क्या करना है. आपको डेटाबेस हेल्पर डॉट जावा क्लास में यहाँ पर आपको एसक्यूएलआइट डेटाबेस से इस मेथड को कॉल करना है, गेट रीडेबल डेटाबेस. इस मेथड को लिखना है इसे कंस्ट्रक्टर के अंदर. और गाइज उसके बाद गाइज आपको मेन एक्टिविटी डॉट जावा क्लास में जाना है और यहाँ पर आपको इंस्टेंस क्रिएट करनी है और इस मेथड को कॉल करना है. उसके बाद हम अपनी डिटेल्स को मॉनिटर कर पाएंगे कि हमारा डेटाबेस क्रिएट या टेबल क्रिएट हुई या नहीं. सो जस्ट डू इट नाउ. सो इट हेल्पर टू न्यू डेटाबेस हेल्पर कॉल दिस. एंड गाइज यहाँ पे मैंने इंस्टेंस क्रिएट कर दी है गाइज. अब इसके बाद ये क्या होने वाला गाइज, इसके बाद गाइज ये मेथड ये इंस्टेंस कॉल करेगा उस कंस्ट्रक्टर को. यहाँ पे दिख रहा होगा आप, ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा. इसके बाद हमारा कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, हमारा कंस्ट्रक्टर जो हमारी टेबल्स और जो हमने क्वेरीज लिखी है यहाँ पर उसके एग्जीक्यूट कर रहा है और हमारे टेबल्स और कॉलम को क्रिएट कर रहा है. गाइज guys, so let me tell this now quickly. Let me tell this now in English. Okay guys, so what we are going to do in now, guys, now here we are monitoring this our database has created or not. So for monitor this we have to write this statement. This statement means we are going to call our this we are going to write this statement in our context, and what it will do, and it will call the it will create the database and create the columns, all things, and then we will call this method in our main activity.java class here by the making of instance this class, and then it will execute, and then it will show the details of our tables or columns in our in logcat window. Guys, so now I am going to run this project, and now I am going to show you the tables or columns is created or not. Guys, so for that guys I have already pass here a message, a log message. This message, by this message we will monitor our tables or database is created or not. Guys, so let me run this app now. So click on this run button or debug, anything. We are going to debug now, so click on this debug icon and let some wait. Okay guys, so now our app has launched in our emulator. Or okay guys, so now I am going to show you how we can check our database is created or tables is created or not. So just to minimize this app and go in this, just down this, and go into Android monitor, and here we are going to search about this name, this tag which we have passed in this, like this database operation. We will write in that in our this in this box, and then we will get this message. Just write this now, database something is wrong. Let me check this myself, it is not so in this search box. Where it is,
it is not showing. I don't know why. Guys, I think it is already done because I have already checked that. So secondly, it is not showing, but don't worry, our database is got created. Database got created, so we no need to worry about that. Just to move on this our next phase on this application. So click this and stop this debugging now. Okay guys, so now what we are going to do, and now we are going to write some methods for inserting the our information in our database and going. So let's do it now. Okay guys, so now we are going to create our method for inserting the details in our database, like username and password. So for that guys, we have to create a new method in this class. So let's do it now. Okay guys, so video is going to be so long, and I want to divide this video in two parts. So guys, for getting the more details, so guys, for learning the how to create a login activity in Android, please move on my move on my next video. Thank you guys for watching my video. Please move on the another video and move on the next video for learning the full concept about how to develop the login activity in Android. Thank you guys for watching my video. Please like and subscribe my channel for getting the more videos about related the how to develop Android apps. Thank you.